In the last lecture, we discussed about dielectrics. What is the difference between conductor and dielectric? The dielectrics is generally of two types uh, based on from which a material it is made. ହେଲା। ତ dielectrics ମାନେ କାଣା କି dielectrics ମାନେ insulators simply ବୁଝିବାର के गले dielectrics are insulators ମାନେ ସେମାନେ ତାकर ଥିରେ free charges नै थान। It's not like they do not have charges ସେମାନଙ୍କର ପାଖେ charge ଥିସି but ସେ charges ମାନେ bound charges ମାନେ free charges ନୁହେଁ ସେ bound charges ମାନେ they are attached to the atoms, okay, and because they are attached to the atoms they are not free to move ସେମାନେ positive negative charge molecular ଯେନ୍ molecules ମାନେ ଯେନ୍ बनबे positive negative charge ସେମାନେ ପାଖେ ପାଖେ ଥିସନ୍ ହେଲା। ତ से charges ମାନେ କେତେ ପାଖେ ପାଖେ ରହିବେ based on that there are two types of dielectrics. Generally there are two types of dielectrics. ଗୋଟେ ହେଲା non-polar dielectrics, ଗୋଟେ ହେଲା polar dielectrics. So what is this? On the basis of charge distribution at molecular level जे ଗୋଟେ dielectric ଗୋଟେ material ଟେ ଅଛି, suppose there is a dielectric material and there is a dielectric material तार भितर से it is made up of so many molecules तो से molecule भितर charge केनथे distribute ହେଇकरी अछि based on that there are two types of dielectrics गोटे ହେଲା non polar गोटे ହେଲା polar हैला। तो केनसी भी जगह रे साइंस रे पोलर वर्ड टा तुम देखो बोले गोटे जिनिस मन रखो सब बोले जे दुईटा पोल सेनो डेवलप ହେଇଛି। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली दिस चैप्टर केनसी भी चैप्टर रे केनसी भी जगह रे मे बी केमिस्ट्री रे भी ये वर्ड टा तुम सुनी पार विभिन्न चैप्टर रे किंबा सुनी थिबो। तो पोलर रो मीनिंग हला कि in some material दुईटा पोल डेवलप होइतबा आइदर नॉर्थ पोल साउथ पोल और पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज ने गुटे आड़ के पॉजिटिव होइतबा तो आर आड़ के नेगेटिव होइतबा एटा गुटे पोल एटा गुटे पोल, ओके। और जदि मैग्नेटिज्म डेवलप होइचे गुटे आड़े नॉर्थ पोल डेवलप होइतबा गुटे आड़े साउथ पोल डेवलप होइतबा दिस इज पोलर। आई दुईटा माने पाखे पाखे जदि रहले पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जदि अति बहुत पाखे पाखे जदि रहले बहुत पाखे पाखे रहले दिस इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल सेनु पढ़मा में नॉन पोलर। तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स माने जिन डाइलेक्ट्रिक नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स माने के बनाई छै। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स माने काना एंता मॉलिक्यूल्स जेंतरे कि से मॉलिक्यूल्स रो पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज पाखे पाखे रहबे। सो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स द मॉलिक्यूल्स इन व्हिच द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज coincide with center of negative charge coincide बोले काना कि पाखे पाखे रहबाटाई coincide means पाखे पाखे रहबाटाई। so positive charge and negative charge say the center of positive charge center of negative charge यदि पाखे पाखे रहले that type of molecule is called non polar molecules। अब से non polar molecule रे बनला dielectric के कुआए से non polar dielectrics non polar molecules रे बनला dielectric के non polar dielectrics कुआए से किछटा examples like जेन dielectric हाइड्रोजन गैस रे बनिचे ऑक्सीजन गैस रे बनिचे कार्बन डाइऑक्साइड CH4 मीथेन तो इस प्रकार रो मॉलिक्यूल्स रे बनला डाइलेक्ट्रिक जरूरी नुहे से डाइलेक्ट्रिक गुटे सॉलिड सब्सटेंस हेतवा डोंट थिंक लाइक दैट डाइलेक्ट्रिक्स कैन बी ए गैस इट कैन बी ए लिक्विड इट कैन बी ए सॉलिड। तो ई मटेरियल मान के एग्जांपल दिया है हमें जस्ट मने रखो बहुत भीतर के हमें इधर पढ़वार नै न जस्ट खाली नॉन पोलर पोलर काना है जे बुझमा और तार किछटा एग्जांपल मन रखो हला। तो दिस इज नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स दीज आर सम एग्जांपल्स। तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स रे काना होचे द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ऑफ द मॉलिक्यूल्स दे कोइंसाइड माने पाखे पाखे रहबे बेसी दूरिया नै रह
whereas polar dielectrics रे कଣା होचे देखो in polar dielectrics the center of positive charge and center of negative charge they do not coincide से माने coincide ना करन बोले पाखे पाखे ना पाखे पाखे ना रहन तार मीनिंग नहे से बहुत दूरिया दूरिया रहबे जस्ट मॉलिक्यूल भितरे डिफरेंट पोजीशंस रे रहबे so if the center of positive and negative charges do not coincide because of asymmetric shape of molecule then these are called polar molecule asymmetric shape बेले ଟିକେ different shape लागि विभिन्न कारण अछि इधर माने we are not going into in detail because this is মানে molecules or shape केनता हवा सेटा it depends on molecular structure which is there in chemistry in your 11th class तो molecular structure भीतर के जिबार नै न हमें खाली एतकी जानबार अछि ये जदि सिमेट्रिक शेप नै सिमेट्रिक बेले गुटे लाइन रे रहबा सब molecules माने गुटे लाइन रे रहबे otherwise there will be some equal distribution of molecules ସବୁଆଡେ ଯଦି ରହିଲା ତ ସେଟା ହେଲା ସିमेଟ୍ରିक शेप एसिमेट्रिक शेप बेले ई प्रकार एंदा अछि H2 molecules तो देखि पारो तो ऑक्सीजन अच्छे ऑक्सीजन रो सीधा सीधा हाइड्रोजन दुईटा ने लगी किंतु एंगल रे लगी छे so this it केनथि लगी एंदा है this comes under molecular structure chemistry रो so these are called polar molecules तो केनटा की polar molecule कहियो positive negative चार्ज दी coincide ना करन because of the asymmetric shape of molecules and these are called polar molecules और से polar molecules रे बनला dielectric के polar dielectrics कहै छै some examples are HCl H2O NH3 এটা মানে polar dielectrics देखो इनो HCl ଅଛି इनो हाइड्रोजन H plus और Cl minus इनो रहला टिके डिस्टेंस रे रहबा इनो and here you know O रो दुईटा माइनस हाइड्रोजन प्लस प्लस तो इतार द्वारा डाइपोल मोमेंट क्रिएट हवा डाइपोल मोमेंट फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव हम जानि छु डाइपोल मोमेंट रो डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट होले काने की डाइपोल बेले काना पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस सेपरेटेड बाय equal and opposite positive negative charges separated by very small distance तो हेंदा इनो नेगेटिव चार्ज डेवलप होचे इनो पॉजिटिव चार्ज डेवलप होचे ताकर भितर किछि गोटे टिके डिस्टेंस होचे इनो डिस्टेंस बिल्कुल नै रहते ही जगह रे इनो टिके डिस्टेंस होचे तो नेगेटिव नो पॉजिटिव चार्ज आडके गोटे डाइपोल मोमेंट क्रिएट होचे इनो हेंदा याडके डाइपोल मोमेंट क्रिएट हवा नेगेटिव नो पॉजिटिव याडके डाइपोल मोमेंट क्रिएट हवा आ दुही डाइपोल मोमेंट रो रिजल्टेंट याडे आसवा से रिजल्टेंट है नो देखा है माने याडके डाइपोल मोमेंट इधर रहा but here there will be no dipole moment so polar dielectrics रे उटे dipole moment create है तो that's it हमको एतकी जानबार छै polar काहे कोहा गला जिंद्रे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड करले ए सॉरी नॉन पोलर काहे कोहा गला जिंद्रे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड करले पोलर काहे कोहा गला पॉजिटिव नेगेटिव टिके डिस्टेंस रे इधर पोलर dielectrics